even the uniaxial compressive strength also. So now the impact of the organic content on tensile strength is also observed, and it was found if the organic content is very high, the tensile strength decreases. Same thing goes with your compressive strength also, that also decreases. And other aspect is lamination. If suppose laminations are present, then your uniaxial compressive strength will be lower between 30 to 45 degree of the angle. And the organic content and the temperature both are going to impact the cohesion and frictional properties of the rock. That also we can observe from this particular figure. And then coming to the triaxial compressive strength and the impact of anisotropy on the material strength. So as we discussed that the depth is going to be around 1000 meters. So at that greater depth, whether the this anisotropy impact will be there or not, that was also studied, and it was found that as the confinement increases, the impact of anisotropy decreases. As we can observe this thing from this particular figure, as you can see, if depth confinement is 35 MPa, we have the huge impact of anisotropic angle, but as you increase the confinement, this is becoming better. So with the depth, this impact will also reduce. With the, so if you heat the samples towards certain temperature, then there will be the impact on the texture, weight, and also on the mineralogical properties. As we can see, with the increasing temperature, number of cracks are increasing, and also the color is changing. This change of the color is basically due to the presence of pyrite in the sample. Pyrite is going to be oxidized to iron oxide and all. So we can understand this thing from this particular X-ray diffraction chart. As you can see, the presence of pyrite is there up to 450 degrees Celsius. Same thing goes with kaolin also. But if we'll heat further to the 600 degrees Celsius, pyrite is vanished, and kaolin is also reduced, is also vanished. The height of the peak is bigger, so that oxidized. So there is a 15% weight loss of the material that is due to the to the geothermal energy aspect. So we have seen the time we won't be able to use it. So those wells we can convert to the geothermal energy systems. So we have two type of systems: direct systems, geothermal energy, in which the heat source is very nearer to the ground surface, and we can directly use it for the purpose of heating and also the energy generation. So the reservoirs can be classified as per reservoir temperature or the physical or the excessive, how these is the thing. Hello? Yes, sir. So current scenario is that mostly we are using this these energy resources like oil, natural gas, and geothermal is very small in fraction. If you look into it, it's only 0.35% of geothermal energy worldwide we are using. Whereas if we'll compare with other resources, mostly we are going with the non-renewable type of resources. And if we'll talk about the Indian scenario, mostly totally we are on the other resources very beginning stage. So there is a scope to explore more about the geothermal energy if we'll talk about the Indian scenarios. So this is the complete distribution with respect to different locations and also
Also, as per the sector-wise, what is the direct heat applications. So if we look into the scenarios, how we have grown in terms of renewable energy resources. So if we talk about the geothermal energy, after 2020, it is increasing. So geothermal is going to play a critical role in that aspect. So if we talk about the Indian scenario, we have few of the geothermal energy reservoirs, but those reservoirs we can use for the geothermal purpose, but direct geothermal purpose. But apart from that, so how we can get that potential to extract the geothermal energy. So this abundant oil and gas well. And also, if we talk about the current CO2 emission norms, we have mostly this CO2 generation from the power sector. And if we talk about the Indian scenario, we are the highest among in the globe for the CO2 emission. So if we are able to control the industry and power sector for the CO2 generation emission, then even we can reduce the CO2 emission, even we can go below the world average also. So thereby we need to switch from non-renewable resources to the renewable resources, and we have to explore all the renewable resources, not only to the specific resources. So these are the certain reasons where geothermal gradients and high geothermal, the high temperature is present. If you look into the temperature in Himalaya, degree Celsius. Andaman Nicobar is their heat source is very close to the ground surface. So likewise, we have the different scenarios like 110 degrees to 124 degrees. So all these resources we can use to convert the to get the geothermal energy. Only thing is that we need to work more on on the fluid, whatever we are going to use for the geothermal process. So these are the locations where some of the geothermal plants or projects are there. They are just in the pilot power plant mode. Only few locations are there. Still, we need to explore more. So geothermal energy extraction are there application. If we our heat sources are near to the surface, closed loop systems are also there. Then we have the combination of two systems, like if we are generating the power from two systems also. Likewise, even the geothermal energy system can be merged with solar systems also, or wind systems also. If we talk about the specifically for Kerala region, here we can go with the solar energy system also, and some sort of geothermal systems we can develop. Even though we don't have that much temperature, but the solar energy can be used in such a way that we can heat certain rocks and then we can extract the energy whenever there is no solar energy in those scenarios. So for extraction purpose, we have the coaxial system in which you have the central pipe and the outer and U-shape outflow. This fluid is going to play a critical role. So here, if you look thermal, not geothermal, the fluid itself. Another one is in which rock this geothermal reservoir is present, because both are going to play a critical role when we are extracting the geothermal energy. So these are some other scenarios in which this is hot dry rock, like granite. If heat source is very near to heat energy stored to go with natural rock, we have to increase the permission to the abundant oil and gas wells. These are the orphaned wells, and they are mostly generating the greenhouse gases, which are detrimental to the environment.
And US has a huge number of abundant oil and gas wells, so which are creating a lot of issues to the environment. So currently from the oil wells, if we are getting the oil, one scenario is direct that oil, if we separate uh, the water from the oil, and oil we can use for our purpose, and the whatever water is segregated, that water is at a certain temperature. So directly this water can be used for the power plant or for the distribution factor, or direct for the direct use that can be done. So these are the certain projects. So now coming to the numerical investigations, what we have started in this particular field. So in this, we started with the coaxial well. So, we took one of case studies to simulate initial things, so that we will be sure about our numerical modeling and all those things. So we have used the COMSOL multiphysics software. In that, we started the numerical modeling, and we modeled of the coaxial well, so that whatever results we are obtaining, they are quite matching well with the existing literature. So we went forward with our studies by using different heat exchangers. So before that, going into detail of the heat exchangers, we started the study by introducing the nanoparticles into the fluid, because is that what we are going to use, which is going to transport this heat from the heat source to the ground surface. So we started with four different type of nanoparticles: Al2O3, Cu, and Al2O3 with combination of Cu. So we found that Cu is more efficient as compared to other three aspects, other three nanoparticles. But the issue is that the cost of Cu is too high, whereas the cost of Al2O3 is very low, but it is not that efficient. So thereby we can see that the combination Al2O3 and Cu is a viable substitute for the Cu. So this study we further took up, and we found that then we have changed the ratios from 100% 0% ratio to 25%, 75%, and CU also. So all we have considered, and we found that this particular ratio, 25% of Al2O3 and Cu 75%, is giving much better results if we talk about the output temperature. So that output temperature we can use to further heat, for further use it in the heat exchangers, those heat exchangers will be connected to the some turbine or something like that, through which power will be generated. So now we started our study related to U-shaped closed loop geothermal system. Initially, we discussed about the coaxial. Then we went with the U-shape. In the case of U-shape, water will enter. Then at the bottom, there will be the exchange of the heat from the surrounding rock. Then it will exit. So this is going to be the outlet. So here, if you look into it, whatever heat is carried at the bottom, at this point, heat exchange will take whatever heat is there, that will be dissipated in the surrounding rock. So then there was the modification by providing. We are not going to insulate it up to a complete depth, but up to a certain depth, which is the critical depth for our scenario. So other aspect is going with the U shape, combining with the coaxial. So in place of the insulation, we fixed the coaxial system. So this extra heat what to the particular scenario also. So this is the system. So the water will flow from that low temperature. In advance, the exchange will be increased in that aspect.
So these are the properties. Then these are the properties of formation rock. So different rocks have been considered. Each different rocks will have a different specific heat capacity and also the thermal conductivity. The thermal conductivity and heat capacity are going to play a critical role when we are talking about the heat exchange between solid and the fluid. So if you look into this image, this particular first case, you have the uninsulated U-shape and insulated due to the presence of insulation from the critical depth, there is a heat loss. So with insulation, there is a heat loss. Coaxial system is at the inlet. So this particular temperature is around 40 degrees Celsius, and if we use this 40 degrees Celsius water as an inlet for the U shape, then further there is a heat loss. So with insulation, there is a heat loss. So primarily we are getting the same heat. So thereby we can thereby we have suggested this particular modifications for the extraction of geothermal energy from the abundant oil wells. So this is the rock temperature. Then different rocks also we have considered. So pyrex. So we have seen the granite and gabbro. They are in the same pyroxenite is giving a higher temperature. Secondary, this heat exchanger, other rocks except marl and limestone, they are at the lower side, whereas your pyroxenite is giving the higher temperature of the for the outlet at the outlet. So this is the comparison between the heat exchanger and COP, coefficient of performance. If you look into the coefficient of performance, that is varying from 1.05 to 1.15 around that. And insulated U shape and hybrid shape, if you look into the thermal power generation, there is a difference around 20%, 15 to 20% variation was there. So from these results, we can suggest that the existing well bores, because in that you have the vertical portion, then you have the horizontal portion. Already it is there. Only thing is that at end of the well, you need to put another vertical portion so that it can be converted to the U shape. And then at your outlet point, you can again introduce the coaxial system so that you can extract more power out of it. So these are the conclusions, like geothermal energy as a feasible substitute for Indian scenario also, and our modified this combined coaxial and U shape producing higher thermal power as compared to the traditional U shape heat exchanger, and coefficient of performance is also higher as compared to other systems. So yeah, that's it. Thank you from my side. If you have any questions, you can ask. Anyone from the participants may ask the question. Thank you, Ankesh sir, for your wonderful experience. A very detailed information has been given by you on this geoenergy concept. And as a civil engineering point of view, we actually want to know the mechanism behind the rocks that will ultimately going to bear the structural load. So thank you, sir, for this wonderful presentation. Thank you, Saurav. If you have any question, you can ask.
No questions from participants. Okay. Okay, so can we stop now Yes, yes, this yes, yes, particular? yes, sir. Okay. Okay. Thank you, Saurav, for this opportunity to share my current research, whatever I am doing right now. So we are also focusing on other aspects also, but this geothermal is one of the aspect what we are dealing here at IIT Palakkad. There are a few more things we are doing, like I already discussed few of the things, solar energy and all, and we want to merge the solar energy with geothermal aspects here at, even in, if we talk about the Himalayan region, like at your place, there also there are in certain things can be done in that aspects. It's a Yes, sir. hilly region. Definitely, sir. I will be in touch with you because we need to do some academic collaborations also from research point of Yeah, view. So maybe after this conference, I will ring you back again to let us have some collaboration research projects like that that can be implemented in the Himalayan zone also. yeah, sure, sure, we will do that. Okay, okay, sir. Thank you, sir. Yeah, thank you, Saurav, thank you all. Good evening, Dr. Anjani Kumar Shukla. Good evening. Good evening, everyone. So, welcome you to this international conference of civil materials and environment for sustainability. So, this is the last keynote speaker of this conference on day one, and he is the alumnus of IIT BHU and currently the managing director of ASCOM BuildCon Private Limited. So, just a small brief of Dr. Anjani Kumar Shukla. So he's currently working as managing director of ASCOM BuildCon Private Limited. He's an alumnus of IIT BHU in the domain of structural engineering, and he is working in the field of retrofitting of structures around the eastern Purvanchal areas as well as from the coastal areas also. And his main focus is how to retrofit the bridges. So he has more than 10 years of industry experience and currently he is working under various government and non-governmental projects. So I welcome you, sir, on this keynote session. And I especially want to learn from your domain that how it's difficult to do work in a laboratory and how it's difficult that same work when it is done in a field. So thank you, sir. Over to you. Sir, please unmute yourself, sir. Oh, sorry. Thank you, Dr. Saurav. Thank you for inviting me in this conference. And thank you. My name is Dr. Anjani Kumar Shukla. I have done my PhD from IIT BHU, and currently I'm working uh, in ASCOM BuildCon Private Limited as a managing director. My company deals in the structural retrofitting, structural health monitoring, and auditing of structures and high-rise buildings. Currently, we are doing few projects in the Bihar. Like as you have seen, the Bihar is sinking the Kosi River, and the water logging is very high in the Bihar and other zones, which is adjacent to the Nepal. So we are retrofitting few bridges which are about to collapse and which are very dangerous. We are saving a bridge in Shahjahanpur right now. We are retrofitting that also, and we are working for in the like Institute of Medical Sciences BHU, KGMC, Lucknow King George Medical College. So this is all about me. Dr. Saurabh, can I represent my PPT here? Just a second.
Please wait. Actually, the Apple is not allowing to share the screen. Just a second. My screen is visual or not? Dr. Saurabh, my screen is visual. Dr. Saurabh, hello. Dr. Saurabh, am I audible? मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है? आवाज आ रही है? Okay, okay. Why anyone is not responding from the group? Okay, okay, okay. Okay. Okay, thank you all. My name is Dr. Anjani Shukla. So here is my presentation. Basically, yeah. So the first thing which we are actually my presentation is divided in 6 parts. In the first part, we will discuss about the reason of failure of bridges. Second, what is the importance of structural health monitoring or regular audits of the bridges? Third one is what is the checklist if you are going to inspect a bridge or any damage or any distress region? What is the checklist which you have to identify whether it is distress or it is just casual distress or any severe distress? Fourth is if you can summarize by your visit by only visual inspection or you need any test like uh, non-destructive, semi-destructive or destructive, all type of tests. What is when you performed any test, then how you will analyze the report of that test, and next and last one is how you will go to prevent that distress. And in the last, we'll see some case studies of the field and some parts of structural health monitoring, the modern structural health monitoring, like wireless sensors and few wireless gauges, few scar monitoring systems, and few satellite monitoring systems, which you will see in the last of the presentation. So, in the most of the cases, this is the statistics of World Bank. The most of the structures which fails in that 50% is share of workmanship error during construction. Why? Because we have stopped producing a quality civil engineers. The second is lack of inspection. Once a structure is built up, nobody is caring up till the structure is showing any distress. So the second part is lack of destruction
instruction is contributing when 30% of failure of overall failure in the world. The third is design error, and it is contributing only 10%. I'm saying only because the people thought that the failure is only due to design error. A common man or a layman only think that any structure collapse only due to design error. But this is not true. The structure is majorly damaged due to workmanship error. The fourth and the very reason of worrying is corrosion. Corrosion is one of the highest single phenomena of any structure which causes the damages in any structure. And the worst part is we don't know that the corrosion is harming at so high level. And the fifth is miscellaneous, like any type of uh, design and workmanship both. Like some we have given any type of specification, but due to some evaluation error, due to some kind of error, only 2% is that. So what will checklist, what will keep the eyes on which point when we go on the site? The first is approaches. If you see in the Bihar, the bridge is intact, only approach has flood away. Second is protective work. Like any method, either you are making the return wall, or you think the gablings or slow pitching, whatever it is, should be designed properly. It should not be the layman. The third is waterway. Waterway comes under what is the obstruction, what is the abnormal changes, flow pattern, what is flood level. The major part is flood level. What is the discharge of nearest river, nearest dam? You have to properly involve a hydraulic engineer in the design of your structure. The fifth is foundation. Next, when you come on the civil point of view, then the foundation is very important. What is the settlement below the foundation? If there is any cracking, any disintegration, any decay, any erosion, you have to monitor this. And clearly, you have to clearly write these things in your report. Next is bearing. Bearing is the one of the major causes which progress to the failures. Like if you just you restrain the movement of bearing, and your beam and your column may get cracked without any reason, without any workmanship failure, without any material failure. Just obstrain the movement of bearing, and your all the bearing beams and your columns may get cracked. So, what is the type of bearing? Whether it is pot PTFE, whether it is elastomeric, whether it is uh, any other type of like paper bearing. Accordingly, you have to check the movement, and you have to check whether it is jammed, it is rotational, it is proper, it is moving or not. Then we have to come on the superstructure. In the superstructure, we have to see piling. Is there any spalling or not? Is what is the spalling uh, 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 trying to elaborate? Spalling is generally a reflection of corrosion. So अगर कहीं पे स्पेलिंग हुआ है तो इसका मतलब यह है कि अंदर corrosion हो रहा है. Any disintegration, any. So these all have to monitor in the superstructure. The next is steel bridges. Steel bridges में आपको सिर्फ अलाइनमेंट ऑफ मेंबर एक ऐसा चीज है, और वाइब्रेशन. जैसे कई सारे स्टील मेंबर जो फेल हुए ड्यू टू ओनली वाइब्रेशन, उनका जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी था वो हमारे नॉर्मल फ्रिक्वेंसी से जो मैच करेगा ना स्ट्रक्चर के फ्रिक्वेंसी, देन इट विल इमीडिएटली कोलैप्स. सो एक्सेलोमीटर होता है. अभी नाउ आई विल शो इन द एंड ऑफ दिस पीपीटी एक्सेलोमीटर. एक्सेलोमीटर लगा के हम बहुत आराम से वाइब्रेशंस को चेक कर सकते हैं. देन देयर आर मैसनरी आर्चेस. Masonry assessment, you have to see the condition of joint. Is there any crack on the joint? Any flattenings?
any type of dilapidation in the mortar, you have to proper check. So these are the things which you have to keep a checklist. After this checklist, after your visual inspection, आपको ये पता करना है whether it is sufficient or not. अगर आपको लगता है कि नहीं, हमको डायलेमा है, I am in a dilemma whether it is structural crack, it is non-structural crack, then you have to go on the testing. There are three type of major testing. First is non-destructive, second is semi-destructive, and third is load testing. And the last one is destructive testing. We generally keep doing the core cutting. We generally start like हमको core test करके पता करना है. Core test would be in the last. So I have not included in this the destructive testing, because if you cut any core in any type of member, then you reduce the moment of inertia. You reduce the section of that member. So we should avoid that. We should uh, we should do these only tests in any type of structure to identify the type of error, the type of failure, the type of distress. क्यों करते हैं हम ये? अगर आपको कोई डाउट है ग्रेड ऑफ कंक्रीट में, M30 का हुआ था, M25 का होना चाहिए था, देन यू कैन गो फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव. आपको लगता है कि पुअर वर्कमैनशिप है, क्यूरिंग सही से नहीं हुआ है, सब ग्रेड स्टैंडर्ड मटेरियल हुआ है, आपको लगता है इंक्रीज इन लोड हो गया, मतलब पहले वहां पे लाइब्रेरी था, अब वहां पे बता रहे हैं कि नहीं, पहले क्लासरूम था, अब बोल रहे हैं लाइब्रेरी बननी है, तो लाइब्रेरी में जनरली लोड आपका बढ़ जाता है. तो आप लोड टेस्टिंग करके उसको पता कर सकते हैं. चेंज ऑफ यूजेज ऑफ स्ट्रक्चर. और अगला है स्ट्रक्चर हेल्थ मॉनिटरिंग. हम अब आजकल क्या हो रहा है ना कि जैसे कोई सा भी टेस्ट ना आपको ये नहीं बताता कि क्या करना है आगे या क्या करके इसको बचाया जा सकता है. सिर्फ स्ट्रक्चर हेल्थ मॉनिटरिंग ऐसा एक सिस्टम है जिसके इस्तेमाल से वी कैन सेव द स्ट्रक्चर. लाइक इफ एनी ब्रिज इज अबाउट टू कोलैप्स इन बिहार, okay, so no test can tell you कि in the next 4 days your bridge will be collapsed, because if you perform any rebound hammer test on any pier, so it will give you the grade of concrete. It cannot predict कि इसमें कितना वाइब्रेशन हो रहा है, इसमें कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है. उसके लिए आपको परमानेंटली स्ट्रक्चर हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम को इन्वॉल्व करना है. अभी हम लोग एक पटना में एक अप्रोक्सीमेटली 2-3 किलोमीटर का ब्रिज है, उस पर पूरा का पूरा वेलेक्सन इंटरप्राइजेज और कई सारी कंपनियां हैं रोडिक जो उसको बना रही हैं, उसमें पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं. उसका पर्पस सिर्फ ये रहता है कि वो आपको एक बिहेवियर देता है कि वेदर योर स्ट्रक्चर इज परफॉर्मिंग इलास्टिकली, नॉन इलास्टिकली, लीनियरली और नॉन लीनियरली. 2-3-4-5 दिन का हम लोगों ने उसमें रिकॉर्डिंग लिया, 1 महीने का लिया, 2 महीने का लिया, कोई ट्रक आया वहां से पास किया, अब वो जो डिफ्लेक्शन है वो रिकवर कितना कर रहा है, कितना टाइम ले रहा है. तो इस बेस पे हम ये बता सकते हैं कि अगर ये इसका डिग्रेडेशन कितने टाइम में हो रहा है और इसको कितना दिन तक हम चला सकते हैं, या इसमें जो सेटलमेंट हो रहा है वो किस स्पीड से हो रहा है और कितना दिन में ये सेटलमेंट दिखने लगेगा, आपको वाइबल हो जाएगा. नॉन डिस्ट्रक्टिव में रिबाउंड आप लोग जानते होंगे, हाफ सेल, अल्ट्रासोनिक, अकाउस्टिक. सेमी में आता है कैफो एंड कोर. लो टेस्टिंग में 2 तरह के होते हैं, एक होता है यूजिंग डायल गेजेस एंड यूजिंग एलबीडीटी एंड डेटा लॉगर्स, जो कि बहुत मॉडर्न है. अब डायल गेजेस तो कोई करता नहीं है, तो वी जनरली डू फ्रॉम द एक्सरोमीटर, फ्रॉम द स्ट्रेन गेजेस, फ्रॉम द एलबीडीटी, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर. So I'm showing you a case study where there is a bridge in the UP. I will not name the location because this is a non-disclosure policy. So we have signed a non-disclosure policy for this bridge. We cannot disclose the name. So this is a bridge. जैसे ही इसको शटरिंग हटाया गया 28 दिन के बाद, there were 22 cracks in the transfer direction of slab. 12 मीटर का स्लैब और उसमें 22 क्रैक्स ट्रांसफर डायरेक्शन में. तो it was a complete structural failure. When we go through the design,
then we found that the reinforcement is deficient by 35%. So, and there was a design error and vetted by a famous IIT of India. So there were five professors we have that have vetted this bridge, and after that, the bridge was gone under construction. But uh, due to their negligence, and this is the case of 2023, and we have just finished the retrofitting, and now the bridge is open for traffic. So after construction of four slabs, when they opened their removed their scaffolding, they found that entire bridge has failed. सब में crack हो गए slabs में. So if you see here in our recommendation, so initially we have given only one line of recommendation that this bridge has to be dismantled. If you see that in the recommendation, the better option is to dismantle. We have improvised in the letter. First, we had write the bridge is to dismantle, but this was the location was very high profile, so there were no chances to be dismantled. Then they asked for remedy. What you can do? So we have properly designed from ACI 440.2R. There is an American code for retrofitting of structure. There is no Indian code available in India, which give you about the strengthening and retrofitting. There is no authorized code in India. So we have used IS 456 and ACI 440 to calculate what is the residual strength and what we can expand. What is the scope for expansion of load carrying capacity? Then we came after एनालिटिकल मॉडलिंग वी केम टू न्यूमेरिकल. हम लोग एक एनालिसिस सॉफ्टवेयर है उस पे आए और उस पे उसी प्रॉब्लम को एक मॉडल बनाया गया. उस मॉडल पे हम लोगों ने इसको सेम गलती करते हुए एनालिसिस को सेम रेनफोर्समेंट दिया. मेशिंग वेशिंग किया गया, कुछ इम्प्रोवाइजेशन किया गया, क्या क्या कर सकते हैं, क्या तुम लोगों ने किया होगा. एंड देन व्हेन वी लोड टेस्टेड द डिफ्लेक्शन वाज 41.38 mm, जबकि अलाउबल था अप्रोक्सीमेटली 8 mm फॉर द डेड लोड, फॉर द लाइव लोड, एंड फॉर डेड प्लस लाइव लोड 15 mm. तो ये तो बहुत ज्यादा था, लगभग 4 गुना अप्रोक्सीमेटली. तो फिर स्ट्रेस देखे हम लोगों ने, स्ट्रेस वाज 3 times than whatever the allowed was. Approximately the formation was 361.8 and the allowable was 110. So the stress was 3 times higher than allowed. So we have designed, then we designed some laminates over the bottom of slabs. These all are in the hypothetical situation. मतलब अभी ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा है, हम सब सॉफ्टवेयर में हम लोग कर रहे हैं. हम लोगों ने एनालिसिस में एक लैमिनेट डिजाइन किया जिसको हम लोगों ने स्ट्रेंथ दिया 4000 मेगापास्कल, 4000 मेगापास्कल. हमारा स्टील का होता है 415, बट हम लोग ले गए इसको 4000 तक, बिकॉज जो स्लैब था ना वो ट्रेपोजाइडल था. मतलब उसका टॉप तो था 7.5 मीटर का, लेकिन हमको जो बॉटम मिल रहा था स्पेस वो हमको मिल रहा था, इफ यू सी हियर, वो हमको मिल रहा था ये देश, यहाँ पे हमको मिल रहा था सिर्फ 4.5 मीटर. तो उस 4.5 मीटर के हिसाब से हमको जो इम्प्रोवाइज करना पड़ा वो 4000 MPa का लिमिट हमने 1.4 mm थिकनेस पे लगाया और स्पेसिंग रखा 200 mm सेंटर टू सेंटर. फिर हम लोगों ने प्रपोज किया, बट they said the agency which was making the bridge, that was the government agency, उन्होंने कहा कि नहीं अभी हम ऐसे नहीं कर सकते, बोलना आसान है बट पहले आप एक इसका मॉडल बनाइए. मैंने कहा सर ये मॉडल है. दे सेड नो, जस्ट कुछ और कंक्रीट चाहिए था उनको. देन हम लोग IIT में गए और IIT BHU में एक मॉडल बनाया गया
सेम उसको डिजाइन, सेम जो गलती उन्होंने किया था अंडर रेनफोर्स, अंडर नॉट अंडर रेनफोर्स, रेनफोर्स डिफिशिएंट स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके हम लोगों ने उसी तरह का बीम बनाया और 4 केसेस लिए. We have taken the 4 cases. In the first case, the beam of size 200 into 200 to 2 meter containing the same reinforcement arrangement with no strengthening measure. हमने उसमें कोई भी strengthening का वो काम नहीं किया. Then सेकेंड केस लिया और सिर्फ बॉटम में एक कंपोजिट लैमिनेट्स लगाया और छोड़ दिया. थर्ड केस में लिया कि हमारा एक्सपीरियंस ये था जो इस फील्ड में काम करते हुए कि ना तो कंक्रीट फेल होता है ना लैमिनेट फेल होता है, वो जो उसमें ग्लू लगा होता है ना, ग्लू फेल कर जाता है. देन वी ट्राई टू मोनोलिथिक होल स्ट्रक्चर. देन हमने क्या किया, कंपोजिट लैमिनेट्स के साथ उसको रैप कर दिया पूरा अपने गटर्स को. एंड देन फोर्थ केस हमने क्या किया कि जो उन्होंने स्टील दिया हुआ था ना 70%, 65%, उस स्टील को पूरा निकाल दिया. कोई रेनफोर्समेंट इसमें था ही नहीं. हम ये मान के चल रहे थे कि मान लीजिए रेनफोर्समेंट इनएक्टिव हो गया तो जो हम करने जा रहे हैं, क्योंकि दिस इज द मैटर ऑफ पब्लिक सेफ्टी, वंस द ब्रिज वाज ओपन किसी के हाथ में कुछ नहीं रहेगा. तो हम लोगों ने सब रेनफोर्समेंट को निकाल दिया, सिर्फ कंपोजिट लैमिनेट्स को लगाया और उसको रैप कर दिया. ये चारों केसेस हैं. ये एक टूटा जो जिसमें हम लोगों ने कोई रेनफोर्समेंट नहीं डाला था, वो टूट भी गया. देन वी कास्टेड अगेन एंड सो दीस आर द 4 टाइप्स which we have casted. So now the problem was we have to arrange a laminate which give the strength of 4000 MPa at the thickness of 1.4 mm and width of approximately 500 mm. So from all the way of China, so China is a country which can give you anything. Just you have to be clear कि आपको चाहिए क्या, आप उनको बता दीजिए. तो हम लोगों ने हॉर्स कंपनी से एक टाई अप किया इस प्रोजेक्ट के लिए और फिर उनसे ये लैमिनेट को डिजाइन करवाया जिसका स्ट्रेंथ 4000 से 5000 के बीच में हो. और फिर उनसे हम लोगों ने इसको मंगाया. इसको जो सेकेंड और थर्ड केस को लैमिनेट्स और फाइबर के लिए तैयार किया गया, उन गर्डर्स को, और उनपे लैमिनेट्स को लगाया गया और रैपिंग किया गया. इसमें आप लैमिनेट देख रहे हैं ये, और इसमें आप ये रैप देख रहे हैं. अब हम लोग इसको ले गए 3 पॉइंट लोड टेस्ट की तरफ. हम लोग को देखना था कि अगर हम लोड लगा रहे हैं तो 23 जनवरी में से ये शुरू हुआ था ये. तो हम लोगों ने देखा ये विदाउट स्ट्रेंथनिंग में ये इसको टेस्ट किया. टेस्ट करने पे हमको जैसे हमारे क्रैक डेवलप होते हैं अंडर एनफोर्समेंट बीम के, सिमिलर पैटर्न में क्रैक दिखे और उसका जो लोड कैपेसिटी था वो आया 1.5 टन 15 किलोमीटर. फिर ये केस 1 है, जबकि जो गलती इन्होंने ब्रिज में किया था ना वही गलती वाला गटर है ये. दूसरा केस हम लोगों ने लिया, हम लोगों ने बॉटम में एक लैमिनेट लगा दिया था विद लैमिनेट्स ओनली. इसको टेस्ट किया तो अच्छा यहाँ पे हमने ये लगाया हुआ है द डायल गेजेस कि हम लोग उसको डिफ्लेक्शन को रिकॉर्ड करना था, कितना डिफ्लेक्ट कर पाएगी ट्रैकिंग के टाइम पे. तो दूसरा जो लगाया इसका जो गया आप देख रहे हैं ये 45 किलोमीटर 4.5 टन अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम हो गया. हमको 3 टाइम नहीं चाहिए था, हमको 30% चाहिए था, आधा से भी कम, बट ये 3 टाइम्स हो गया. नेक्स्ट हमने तीसरा किया जब उसको रैप कर दिया सेकंड वाले केस में, तो ये चला गया 86 किलो न्यूटन अप्रोक्सीमेटली 8.6 टन. और ये अभी तक ये क्रैक नहीं हुआ था, बट हमारे जो एक शारदा जी हैं उन्होंने बंद कर दिया डर के मारे, ये बम की तरफ फट जाएगा ये जब बीम टूटेगा, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में देखा नहीं था कि कोई भी बीम 2 मीटर का इतना लोड ले लेगा. तो चौथा जो केस था यहाँ देखिए लिखा नो स्टील रेनफोर्समेंट, इसमें कोई रेनफोर्समेंट है ही नहीं, केवल फाइबर्स हैं और लैमिनेट्स हैं. इसको जब टेस्ट किया हम लोगों ने तो इसका स्ट्रेंथ आया अप्रोक्सीमेटली 60 किलोमीटर 6 टन के आसपास है. 6 टन आने पे भी हमारा जो पर्पस था सॉल्व हो रहा था. तो हम लोग इसको लेके गए साइड पे.
अच्छा, इसका रिकवरी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे स्ट्रक्चर का ना डिफ्लेक्शन होना या टूटना कोई बहुत खराब बात नहीं है, अगर वो रिकवर हो जा रहा है इमीडिएटली। जैसे रबर होता है ना, रबर तो डिफ्लेक्ट करता है, जैसे आप छोड़ते हैं वापस अपने स्थिति में आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये केस नंबर 1 है, जो कि हमारे कन्वेंशनल रेनफोर्समेंट से बना है, कि तोड़ने के बाद पूरा उसी शेप में रह गया, वापस नहीं आया, बिकॉज वो नेकिंग और उसके बाद फेलियर जोन में चला गया था, अल्टीमेट फेलियर जोन। बट आप देखेंगे ना केस 2, 3 और 4, तो इनमें आपको थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला, ये सब के सब रिकवर करके। तो ये बहुत ही हमारे लिए अच्छा रिजल्ट रहा। फिर हम लोग गए इसको साइड पे एग्जीक्यूट करने। जब हमने पहला, हमारे साथ दिक्कत क्या था उस टाइम पे, कि हमको ये पता करना था कि जो हमारा कंक्रीट का स्ट्रेंथ है ना, वो आ, हमने लैमिनेट लगा दिया, ग्लू लगा दिया, फाइबर लगा दिया, वी हैव अप्लाइड ऑल, बट वेदर द कंक्रीट इज अप्रोप्रिएट और नॉट। कंक्रीट ही कमजोर रहेगा तो क्या होगा, आप लगाएंगे और जहां पे आप उसको एंकरिंग करेंगे, जहां पे आप ग्लू करेंगे, वहीं से छोड़ देगा, कंक्रीट ही निकल जाएगा। तो अल्टो गाड़ी में अगर हम हमर का पहिया लगाएंगे, तो जहां पे आप लगाएंगे वहीं से निकल जाएगा वो। ऐसा नहीं है कि हमर का पहिया लगा देने से सिर्फ वो 200 की स्पीड चलाएगा, इंजन भी अच्छा होना चाहिए। तो हम लोगों ने पहले चेक किया कि इसका कैपेसिटी क्या है, तो ठीक ठाक था, M45 था, तो ये हुआ कि ठीक है। देन स्टेजिंग लगाया गया, एंड इसको पूरा, ये आप क्रैक देख रहे होंगे, ये सब क्रैक है, ये सब क्रैक है। इसको पूरा साफ वाफ करके, बिकॉज डस्ट, अगर डस्ट रहेगा तो आपका स्ट्रेंथ 20 से 30% घट जाएगा। फिर पॉलीमर ये लगाया गया, प्राइमर। प्राइमर का काम ये होता है ना कि ये बता दे पुराने वाले कंक्रीट को कुछ नया आने वाला है, तैयार हो जाए, बॉन्डिंग अच्छा कर देता है। अब हमारे पास एक चैलेंज और था। अब देख रहे होंगे ना, ये जो जोन है ये बियरिंग जोन है। बियरिंग के बाद भी जो स्लैब है ना, अगर आप इसके आगे आप लैमिनेट फुल लेके जा नहीं सकते, बिकॉज आपको प्रीस्ट्रेस करना है, बिकॉज सैग हो गया है। तो प्रीस्ट्रेस मशीन और इसको आप अंदर लेके जा नहीं सकते। अब अगर आपने पूरे स्लैब को स्ट्रेंथन कर दिया, बट ये लास्ट का अगर आपका कुछ मीटर रह जाएगा, तो ये यही से क्रैक कर जाएगा, वापस बियरिंग के ऊपर क्रैक कर जाएगा। तो हमने बियरिंग के ऊपर लोड ट्रांसफर के लिए हमने पोल्टराइज्ड कुछ कार्बन फाइबर थे, उनको लगा के उस लोड को, जो कि पूरे स्लैब का आ रहा है, उनको बेरिंग के एंड तक लेके गए, इनको काटे, टचुन मिक्स करके ये लगा दिए। तो अब देखिए इसके लोड ना आराम से, दीज आर द फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो इसको ये फ्लेक्सिबल आराम से यहाँ तक लेके गया, क्योंकि हम लोग जो लैमिनेट लगा सकते थे वो सिर्फ यहाँ तक लगा सकते थे। अब लैमिनेट का 200 पे मार्किंग हुआ, ये है डियर लैमिनेट, एंड इसको काटा गया, इस पे इपॉक्सी लगाया गया, एक ऐसा हार्डन ग्लू जिसका कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इतना सफिशियंट हो कि वो 4000 MPa को लेने के लिए तैयार हो, क्योंकि हमारा फेल तो यही से करेगा। फिर इसको हम लोगों ने ग्रिपर लगाया, और ग्रिपर लगा के उसके बाद प्रीस्ट्रेसिंग किया, और प्रीस्ट्रेसिंग करके परम हाई स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम प्लेट, HSFE प्लेट होते हैं, जो कि सिर्फ हिंडाल्को या इंडस्ट्रीज में ऑर्डर पे बनाए जाते हैं, जिनका जिनका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता है, अप्रोक्सीमेटली 300 ईयर्स होता है इनका जो लाइफ स्पैन होता है। इनको लगा के प्रॉपर बोल्टिंग कर दिया गया, ये आप देख रहे होंगे, ये प्रीस्ट्रेसिंग हो रही है, क्योंकि क्रैक आए हैं, इसका मतलब कि आपका गर्डर स्टैक किया हुआ है। स्टैक किया हुआ है तो आपको उसको वापस उसी अवस्था में भेजना पड़ेगा। तो उसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर इतना से सैगिंग है और लोड इतना है, तो इसको ऊपर ले जाने के लिए कितना आपको एक लैमिनेट पे कितना लोड लगाना है। देन वी कैलकुलेटेड द लोड वाज केम अप्रॉक्स 4 tons. We applied the processing force of 4 ton on each laminate, and then after processing we just glued the plates. You see, after processing we glued the plates and anchored all. After gluing and pasting and processing, we release the temporary plates. Now
we applied the primer, and after that we applied the polymer modified mortar. Why? To avoid the dynamic vibrations which is coming in the bridge. दो there are two things. First, हमको इसको पब्लिक से बचाना है कि पब्लिक लगेगा कि ये नीचे क्या हो रहा है. There are so many much media and all. तो पॉलीमर मॉडिफाइड मोटार वाइब्रेशन को बहुत आराम से ले लेता है. एंड दूसरा, आपको बॉटम से कुछ दिखेगा ही नहीं कि यहाँ पे कोई काम हुआ है. मेश वायर लगाए गए, दीज आर द 1:5:15 के रेशियो में पॉलीमर डाला गया और डाल के इसको प्रॉपर, ये अभी का शेप है जो उसमें है. तो उसमें आपको पता नहीं चल रहा है कि वहां पे क्या हुआ. और जो हम लोगों ने जो थिकनेस कम किया, जो आपका कवर था वो सिर्फ 1.4 mm आपका फाइबर का, और उसके बाद 10 mm और. तो ब्रिज का जो हाइट था ना, उसका जो कंप्रोमाइज हुआ वो 15 mm से कंप्रोमाइज हुआ. तो अगर 5 मीटर का हाइट है, क्लियर हाइट अगर 5 मीटर का है फ्रॉम द ग्राउंड, एंड 15 mm कंप्रोमाइज हो गया, तो उससे मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ने वाला. देन अब हमको लोड टेस्ट करना था कि विदाउट लोड टेस्टिंग तो उसको खोल नहीं सकते थे. लोड टेस्टिंग होगा क्लास ए के लिए. तो हमने IRC 51 के हिसाब से एक इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाया उसका, और एक अरेंजमेंट ऑफ व्हीकल्स उस हिसाब से किए 5 एक्सल के, और उन पे लगा दिया. ये सिमिलरली हमने वो लोड लगा दिया अप्रोक्सीमेटली 120 टन, और ये बॉटम में सेंसर लगा दिए LVDTs लगा के. हम लोगों ने चेक किया, द डिफ्लेक्शन वाज अप्रोक्सीमेटली 1 mm. तो हम लोगों ने जो एनालिसिस से कैलकुलेट किया था वो अप्रोक्सीमेटली 2 mm था आफ्टर रेट्रोफिटिंग, बट साइड पे 1.5 1.7 के अराउंड 24 आवर लोडिंग पे ये आ रहा था. देन वी ओपन द ब्रिज. अब जो हमारा दूसरा सेगमेंट है कि अगर हम लोग को इस तरह के कोलैप्स से बचने हैं या इस तरह के डिटोरेशन से बचना है, तो क्या क्या हम लोग स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग में क्या क्या कर सकते हैं. देखो, तो सबसे पहला जो दो तरह के होते हैं स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग. द फर्स्ट इज, जस्ट सेकंड, जब आपका स्ट्रक्चर बन रहा हो बिफोर कास्टिंग ऑफ द कंक्रीट, उसमें रेनफोर्समेंट के साथ हमने स्टर्न गेजेस को लगा दिया, वायर को अपने डेटा लॉगर के साथ कनेक्ट कर दिया. यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हमारे वो है लॉगर्स है. इनको जैसे अभी इरेक्ट कर रहे हैं, इरेक्ट करते समय ही उसको लगा दिया, लगा के और लॉगर के साथ कनेक्ट कर दिया. ये सोलर पैनल्स है, सोलर के साथ इनको जोड़ दिया ताकि हमको बिजली का सप्लाई कौन करेगा. सोलर पैनल से ऑटोमेटिक एक सिम कार्ड लगा दिया, और उसके साथ ये हमें अब 10 साल 15 साल जो भी आपका, जैसा आपका क्लाइंट पैसा दे रहा है उस हिसाब से आप उस प्रिसीजन का, उस क्वालिटी का आप वो लगा दीजिए, और लगाने के बाद उसको छोड़ दीजिए. अब आपको एक सर्वर मिलेगा, जैसे मोबाइल का सिग्नल आता है वैसे एक सर्वर होगा. वो आपको हमेशा, आपका अगर साइट है हिमाचल में और आपका ऑफिस है दिल्ली में, तो आपको दिल्ली में बैठ के आपको डेटा मिलता रहेगा एवरी सेकंड का, कि हवा अगर शाम को 4 बजे चल रही है और उस टाइम पे कोई ट्रेन जा रही है, तो जो वाइब्रेशंस इंड्यूस्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ रेल व्हील्स, ड्यू टू वैगन्स एंड ड्यू टू एयर, इन तीनों को मिला के जो मैक्सिमम हो रहा है वो क्या हो रहा है, और नेचुरल फ्रिक्वेंसी से कितना दूर है या कितना पास है, या डिफ्लेक्शन में कितना वेरिएंस है, तो ये आपको समझ मिल जाएगा. दूसरा है वायरलेस टिल्ट सेंसर. अगर आपने बियरिंग पे लगा दिया, तो बियरिंग कितना टिल्ट कर रहा है, कितना आपका रोटेट कर रहा है, ये आपको मिल जाएगा. इससे आप डिफ्लेक्शन भी निकाल सकते हैं. डिफ्लेक्शन कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम इस टिल्ट सेंसर को बॉटम में लगा दें, बॉटम ऑफ योर, अच्छा ये अब एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इसका रेफरेंस क्या होगा. तो इसका रेफरेंस होगा सैटेलाइट. सैटेलाइट का जो पोजीशन होगा लगाते समय, और जब आप रीडिंग ले रहे हैं उस टाइम पे, ये पूरा ऑटोमेटिक है. तो उससे हम रेफरेंस लेकर के और आप ये मालूम कर सकते हैं कि ये कितना डिटोरिएट हो रहा है या कितना मूव कर रहा है. नेक्स्ट है वाटर लेवल इंडिकेटर. एक लेजर टाइप में एक सेंसर होता है, उसको लगा देते हैं अपने पियर के ऊपर. जैसे बिहार में इसमें बहुत जरूरत है,
रातों रात पानी जो है बढ़ जा रहा है, सो रहे हैं कुछ और। अब सपोज करिए कि 4 इंजीनियर और 300 नदियां हैं, पॉसिबल नहीं है कि वो जाके 300 नदियों को पता कर पाए। तो एक ही टाइम पे आपको मालूम हो जाएगा ऑल द 300 में कि आप किसी बीच में एक जगह लगा, जहाँ पे डेप्थ ऑफ वाटर मैक्सिमम है, वहां पे आप लगा सकते हैं इसको। लगाते ही आपको मालूम हो जाएगा कि इनके कितना ज्यादा इनमें वो आ रहा है, वाटर लेवल कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, ये आप पता Excuse me, sir. या Pardon me. What is the cost of approximate cost of these type of sensors? For example, we want to install this water level indicator wireless sensor. जैसे वाटर लेवल जो इंडिकेटर्स है, इनको अगर हम बात करें, वायरलेस 2 तरह के हैं, एक तो वायरलेस है और एक तो हम्म। वायर्ड है। तो अगर आप हम्म। वायरलेस की बात करें तो लगभग 50,000 रुपए का एक आता है, 50,000 रुपीज। Okay. लेकिन कॉस्ट ये नहीं है, कॉस्ट है इसको मेंटेन करना, 5 साल 10 साल या 15 साल या 20 साल। ठीक है, तो 20 साल के लिए अगर आप वेबसाइट का डोमेन लेंगे, जो जिस वेबसाइट से आप डेटा लेंगे, मैंने मान लीजिए मैंने www.ascombuild.com पे ये डेटा मैं ले रहा हूँ, कि वेबसाइट को मेंटेन करना पड़ेगा। एक उसमें आप सिम कार्ड लगाएंगे जो हर में रिचार्ज होगा, एक वहां पे आप प्रोटेक्टिव सिस्टम लगाएंगे, कोई चोर उसको उखाड़ के लेके चला जाएगा। ठीक है, तो इन सब का कॉस्ट उसमें ऐड होता है। बट इनका ये एक तरह के लेजर लाइट्स हैं, अपने अपने कॉलम पे लगा दिए। ठीक है, अब वो हमेशा लेजर लाइट आपके वाटर लेवल के सरफेस पे, अपर लेवल पे वो टच कर रहा है। जितना भी वो टच कर रहा है आपका लेवल वो है। ठीक है, जैसे वाटर लेवल बढ़ेगा, लेजर लाइट का डिस्टेंस खत्म हो जाएगा, एंड यू विल नो कि ये कितना वो है। जैसे स्ट्रेन गेजेस है, अब स्ट्रेन गेजेस अगर आप वायर्ड स्ट्रेन गेज ले रहे हैं तो हमें लगता है 1,000 रुपए का आता है। आप वायरलेस ले रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 6 से 7,000 का आता है एक। ठीक है, तो अब स्ट्रेन का क्या है, आप लगाने के बाद ये सिंगल यूजेस है केवल। जैसे जो 1,000 रुपए का आते हैं, एक बार आपने लगाया, स्ट्रेन हुआ, खराब हो गया। बट अगर आप वायरलेस ले रहे हैं और आप इसको मल्टीपल यूज के लिए ले रहे हैं, ठीक है, कि हर एक, जैसे आपने कास्टिंग के टाइम पे ना आपने रेनफोर्समेंट के साथ इसको टाई कर दिया और फिर उसमें कंक्रीट को काट कर दिया। ठीक है, काट, अब जैसे कोई ब्रिज बन रहा है, पटना में केबल से ब्रिज बन रहा है, अब उस ब्रिज में आपने जो उनके केबल्स हैं, वो केबल को जब उस बॉक्स में डालते हैं ना, केबल से ब्रिज में, जैसे आपने देखा केबल से ब्रिज, सारे केबल एक बॉक्स में होते हैं। उन केबल के बॉक्स में डालने से पहले आप उसको चिपका दीजिए। ठीक है, चिपकाने के बाद उनका डेटा लॉगर कहीं बॉटम ऑफ ब्रिज में छुपा दीजिए, चिपका दीजिए, और अब वो आपको 10 साल 5 साल तक रीडिंग देता रहेगा। जितना भी तनाव होगा ना, ड्यू टू विंड, ड्यू टू ट्रैफिक, वो देता रहेगा। अब डिपेंड करता है आपको 1 साल के लिए चाहिए। जैसे क्या होता है ना कि क्लाइंट बोल रहा है कि जब आप प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करिए, हैंड ओवर करने के बाद 2 साल तक आप उसको हमको दे दीजिए, तो उसमें जो क्वालिटी ऑफ स्ट्रेन लगते हैं, स्ट्रेन गेज, वो अलग होते हैं, उनके प्राइस अलग है। और कुछ के होते हैं कि आप बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर बीओटी मॉडल पे हैं, तो वो 10 साल के लिए या 15 साल के लिए, तो उनके कॉस्टिंग अलग है। तो रिसर्च पर्पज के ले रहे हैं, एक बार केवल यूज करना है, यूज एंड थ्रो करना है, तो 500 रुपए का आ जाएगा, 700 रुपए का आ जाएगा। आप 10 साल के ले रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट 4 लाख 5 लाख रुपए का आएगा, तो 500 रुपए के लिए 5 लाख। ठीक है, इतना वेरिएशन है, इतना वेरिएशन। थैंक यू सर। ये देख रहा है, ये डेटा आ रहा है, एक हम लोगों ने एक ब्रिज का किया था, ये एक पूरा डेटा आ रहा है। जैसे यहाँ पे आपका ये केबल से ब्रिज है, इस पे लोड लग रहा है, लोड लगने के बाद ये आपका सेंसर है। ठीक है, यहाँ से आपको आपने कुछ भी जब भी लोड देंगे ना, तो देखिए यहाँ पे उसी सेकंड में ये देख रहे हैं आप, ये जो लाइन आ रही है, ये लाइन जो अभी हमने दबाया ना, उस पे उसकी लाइन आ रही है। तो जैसे कोई ट्रैफिक निकला, कोई जैसे विंड आया, कुछ भी आया, तो आपको इमीडिएटली मालूम हो जाएगा। लेकिन इस डेटा का हम करेंगे क्या? इस डेटा का हम ये करेंगे कि जैसे हमने 20 से 25 दिन का डेटा ले लिया, या हमने एक मानसून का डेटा ले लिया, अब इसको ना सिंक्रोनाइज कर दिया कि हमको 4 से 5 के टाइम पे मैक्सिमम ये आ रहा है, तो हम उस टाइम पे, जबकि विंड एकदम ज्यादा